Hi and good afternoon, everyone. Welcome to Supergrads. My name is Abhin Chauhan, and here we are with another session. Another session. इस सीरीज में जो मैं आपको टॉपिक वाइज सेशंस करा रहा हूँ, उसमें आते 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 here we are. And today's discussion, students, is on figures of speech, concept plus practice. So concept, the most important figures of speech जो हमारे CUET एग्जाम के लिए हैं जरूरी 2022 में भी थे, 23 में, 24, 25. सो फॉरेन सो फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ टॉपिक जो बार बार एनटीए पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मूविंग इनटू 2026 यहाँ से क्वेश्चन होंगे. सो वो इंपॉर्टेंट 15 टू 20 फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं उन पर डिस्कशन करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यू हैव प्रैक्टिस. अब ये प्रैक्टिस आपको कहाँ मिलेगा? वंस वंस द लाइव सेशन इज ओवर, आपको कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट्स में ऊपर एक लिंक मिलेगा. वो लिंक पर आप क्लिक करो एंड यू कैन गो एंड प्रैक्टिस फॉर फ्री. लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन, स्टूडेंट्स. सो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है, एंड ऑफ कोर्स रूल्स तो कुछ भी नहीं है, बट देयर इज अ नॉर्म कि फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्टिंग में सबसे पहले हम सिमिली एंड मेटाफर पढ़ते हैं. सिमिली एंड मेटाफर आर सच फिगर्स ऑफ स्पीच जो बहुत इजी भी हैं, बहुत बच्चों को पता भी होते हैं, स्टिल वो फंस जाते हैं, स्टिल वो गलतियां कर जाते हैं, स्टिल उन दोनों में जो सटल डिफरेंसेस है बच्चा उन्हें नहीं पकड़ पाता है. सो हियर इज व्हाट सिमिली इज, स्टूडेंट्स. ये रहा सिमिली आपके पास, एंड मैं आपके इस पर भी डिस्कशन करूंगा. हाउ इज सिमिली एंड मेटाफर डिफरेंट? So simile, students, simile compares ideas using the words like and as. So in simile, we are talking about comparison. Comparison किसका? Comparison of two dissimilar objects. Dissimilar word important है. Two dissimilar objects on a similar quality. ऑब्जेक्ट्स डिसिमिलर हैं बट दोनों में एक क्वालिटी है जो कॉमन है, दैट इज हाउ वी यूज सिमिली, दैट इज हाउ वी डू कंपैरिजन, स्टूडेंट्स. सो दे हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द थिंग डिस्क्राइब्ड बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग दैट दे ऑलरेडी नो. द रनर वाज एज फास्ट एज लाइटनिंग रेसिंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन. रनर वाज एज फास्ट एज लाइटनिंग. रनर अलग चीज है, लाइटनिंग अलग चीज है. दीज आर टू डिसिमिलर थिंग्स, बट दोनों की स्पीड का कंपैरिजन किया गया. सो वो सिमिलर क्वालिटी क्या थी? वो सिमिलर क्वालिटी यहां पर थी स्पीड. सो ये एक सेंटेंस हुआ, ठीक है. इंपॉर्टेंट है अगर यहां पर कुछ, सो इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स. वर्ड्स लाइक एंड एज. वर्ड्स लाइक एंड एज, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है. इसके अगर कुछ और एग्जांपल्स मैं देखूं, ही बैट्स, ही बैट्स लाइक विराट कोहली, ठीक है. सो देर आर टू डिफरेंट पीपल. एक कोई इंडिविजुअल है, एक जगह द ग्रेट विराट कोहली है, बट वी आर कंपेयरिंग दीज टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सिंगल क्वालिटी, एंड दैट इज बैटिंग. सो लाइक एज, these words are used for comparison. नेक्स्ट अप, सिमली जैसा ही रोल प्ले करता है, सिमली जैसा रोल प्ले करता है, दैट इज मेटाफर, स्टूडेंट्स. सिमली में सिमली में हम क्या करते हैं? वी से ए इज लाइक. इन सिमिली वी से ए इज लाइक बी. मेटाफर में हम ये नहीं कहते कि ए इज लाइक बी, हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं. सो इन मेटाफर देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. इन मेटाफर देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन. सो यहाँ पे ये वर्ड्स नहीं होते विदाउट वर्ड्स लाइक एंड एज. सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं द क्लासरूम वाज अ जू, सो क्लासरूम जू जैसा नहीं है, क्लासरूम जू हो गया. क्यों? जू में क्या एक्सपेक्ट करते हो? यू एक्सपेक्ट chaos, you expect noisy animals. This is what you expect in zoo. You expect chaos, you expect noisy animals. So अगर मैं कह रहा हूं classroom is a zoo, classroom is a zoo, if I say that, so that by default means कि जो जू में chaos होता है वही क्लासरूम में हो रहा है, वही क्लासरूम में हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. मेटाफर के लिए
एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, just to make sure you guys understand the difference between simile and metaphor. So if I write he fought like a lion, एंड अगर मुझे इसी चीज को, दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिटन इन सिमिली, इफ आई वांट टू राइट इट इन मेटाफर, सो बस लाइक यूज नहीं करूंगा, आई वुड से ही वाज द लायन इन द फाइट. सो कंपैरिजन, अगर मैं किसी को लायन बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज ऑफ ही लुक्स लाइक अ लायन और बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, it is because of that quality of being brave and ferocious. So that is how you differentiate between simile and metaphor students. देखो, जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना, जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, सो उसमें भी आप छोटे छोटे सब कैटेगरीज बना सकते हो. फर्स्ट कंपैरिजन के लिए सिमिली मेटाफर, फिर कॉन्ट्रडिक्शन के लिए होते हैं, रिपीटिशन के लिए होते हैं, तो उसमें भी आप सब कैटेगरीज बना सकते हो. द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज एलिटरेशन. Alliteration is about repetition. Repetition of consonant sound. Repetition of consonant sound. Repetition of consonant sound at the beginning of a sentence. Sentence के starting में, word के starting में, repetition of consonant sound. So ये लिखा हुआ है. The blue balloon. ठीक है. So blue, then balloon, the big blue balloon bounced off the boy. So there is a repetition of this word be. अगर इसका एक और एग्जाम्पल हम लिखना चाहें, so we can write cute cats, cute cats cooking carrots, cute cats cooking carrots. अगेन इस सेंटेंस में भी आप देखोगे देयर इज रिपीटेशन ऑफ सी. सो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इफ देयर इज सच रिपीटेशन इन सेंटेंस, आप बोलते हो कि सर ये यहाँ पे एलिटरेशन यूज हुआ है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात हुई है तो वॉवल साउंड भी होगा, वॉवल साउंड का रिपीटेशन का क्या? सो लेट्स फोकस ऑन दैट. द नेक्स्ट figure of speech that we have is assonance. Assonance में क्या होता है? There is repetition of vowel sound. Repetition of vowel sound. Repetition of vowel sound, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि there is use of assonance. So vowel sound, actually में vowel sounds beginning में नहीं but वर्ड्स के बीच में, रिदम के लिए, राइमिंग के लिए, वहां पर we say that there is use of assonance here. So ये कुछ examples हैं students. The rain in Spain stays mainly in the plain. So there is repetition of this long A in 4 words. कौन से words हैं? Rain, Spain, mainly, plain. Here the mellow wedding bells. So there is repetition of E in mellow wedding bells. Try to light the fire. So I का sound in try, light and fire. So you can look at these 3 examples. और मुझे बताइए इन 3 examples के through क्या आपको assonance clear है students? Does everyone now understands what assonance is all about? So this is what I call assonance students. So repetition of consonant sound हमने देखा it was alliteration. For assonance ऐसा जरूरी नहीं है कि वो vowel sound sentence के beginning में हो, word के starting में हो, नहीं, it can be in the middle of the word as well. ठीक है, जो words यहाँ पर आप देख रहे हो, rhyming, basically rhyming का sense यहाँ पे create होता है. Rain, Spain, mainly, plain, and of course
in other examples as well. So this is what we call assonance. Next up we have anaphora. एनाफोरा में क्या अलग हो रहा है? एनाफोरा में क्या अलग हो रहा है? सो रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, रिपीटेशन ही है यहाँ पे भी, रिपीटेशन ऑफ वर्ड repetition of word at the beginning of the sentence. So अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, so what do you see here? You see this, he ran over the hills, he ran until he could not run. मतलब एक ही वर्ड पे या एक फ्रेज पे एम्फेसिस डालते हैं. अगर आप मेरी बातों से मोटिवेट हो जाते हो तो आप बोलते हो ना, सर आई स्टार्ट गिविंग मॉक्स टुडे, आई स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी फ्रॉम वर्ड पाम एडीजी, सो आई विल, ये रिपीटेशन बार बार हो रहा है. So that is exactly what we call anaphora, repetition at the beginning of the sentence. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेशन तो है पर किस टाइप का रिपीटेशन है, स्टार्टिंग में. सो हमने कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन देखा, हमने वॉवल का रिपीटेशन देखा, हमने देखा when there's a word at the beginning of the sentence that is anaphora. क्या इसके अलावा भी कोई रिपीटेशन है? नहीं लिखा है बट बता देता हूं. there's one more students and that is epiphora. epiphora, इसमें क्या होता है? रिपीटेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. repetition at the end of a sentence. एपिफोरा. सो चार टाइप का रिपीटेशन हम देख रहे हैं. द लास्ट वन इज रिपीटेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, सो इफ आई राइट आई लाइक पिज्जा, शी लाइक्स पिज्जा, वी ऑल लाइक पिज्जा. सो दिस वर्ड, बस कुछ नहीं करना, आपको देखना है ये वर्ड है और ये बार बार सेंटेंस के एंड में जा रहा है. सो क्या किया अभी तक? दो फिगर्स ऑफ स्पीच देखे फॉर कंपैरिजन, फोर फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर रिपीटेशन. सो फिगर्स ऑफ स्पीच में भी आप छोटे छोटे सब कैटेगरीज बना सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव हाइपरबोल स्टूडेंट्स. हाइपरबोल, where there is exaggeration, where there is exaggeration. हाइपरबोल में क्या है? देयर इज एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज, बढ़ा चढ़ाकर आप कोई चीज को डिटेल में बता रहे हो. लाइक आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, his smile was a mile wide. If I say she has $1 million smile, so कुछ बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके मैं चीजों को बता रहा हूं. That is what hyperbole is. So here the level of hunger is exaggerated to emphasize it and to emphasize it rather and make a point about it. एक और एग्जाम्पल इसका लिखते हैं. If I write, if I write, my brother is so intelligent, he makes Einstein look average. My brother is so intelligent, he makes Einstein look average. So brother के इंटेलिजेंस का लेवल कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया, ज्यादा ही इमोशनल हो गया और बोल दिया कि यार आइंस्टीन भी उसके सामने ना फीका सा पड़ रहा है, एवरेज सा लग रहा है. So that is what hyperbole is, students. Next up we have personification, again very important figure of speech.
जहां पर we give human qualities to inanimate object, we assign human qualities to inanimate objects. So अगर आप देखो यहाँ पर क्या ह्यूमन क्वालिटी दिख रही है, it is different from anthropomorphism. So how are these two different? Anthropomorphism में क्या होता है, हम एनिमल्स को बिल्कुल ऐसा शो करते हैं जैसे कार्टून कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे कि एनिमल्स कहीं पर बैठे हुए हैं वहां पे बोन फायर के बगल में, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर नेबर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर ह्यूमंस. सो वो एंथ्रोपमॉर्फिज्म होता है. पर्सोनिफिकेशन में जनरली प्लांट्स, सन, मून, इनको हम क्वालिटीज एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. सो अगर एग्जांपल देखो, द सन स्माइल डाउन ऑन द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, सो सन इज स्माइलिंग. The sky is crying, the clouds are roaring. These kind of sentences are what we call personification. So it is different from anthropomorphism. Anthropomorphism में हम animals को human की तरह portray करते हैं. The Simba वाली आपने story सुनी होगी. There are many cartoon characters that are based on it. So एक slide में आपने दो figure of speech सीखे हैं. First one was personification. The next one was anthropomorphism. Next up we have onomatopoeia. This pop sound, tuck sound. So words that are words because of the sound they produce. Sound की वजह से word बन गए. Word थे नहीं है English में. Sound की वजह से word बन गए. So is a speech where sounds are described to create an effect. The soda fizzed and hissed as it was poured into the glass. So fizzing and hissing, these are not words. But जब उसको pour कर रहे हैं ऐसा आवाज आ रहा है. ऐसा आवाज आ रहा है. So that is what onomatopoeia is. Onomatopoeia are words because of the sounds they produce. So words like ding dong of bell, words like tick tock of watch, words like science के experiment में हम करते हैं pop sound. So that is what onomatopoeia is. What do we have next? We have irony, students. Now अब जो हम figures of speech पढ़ने वाले, these are again very important because they are to express contradiction. Because they are here to express contradiction. Contradiction के लिए, ठीक है. So irony is a figure of speech where the words one expresses do not mean what their literal meaning indicates, but mean the opposite. Ironic to see a dentist having bad teeth. It is ironic to see a heart specialist doctor, the cardiologist, dying because of heart attack. Psychiatrist डिप्रेशन में चला गया. दिस इज आयरॉनिक. पुलिस स्टेशन में चोरी हो गया, फायर स्टेशन में आग लग गया. ये सारे एग्जांपल्स आयरनी के होते हैं. सो आयरनी के अंदर ही मैं बाकी सब भी कैटेगराइज करता हूं. थिंग्स लाइक पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट अप वी हैव अ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. इट इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस है उसमें दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, सो इफ वन इज ट्रू द अदर वन कैन नॉट बी ट्रू. जैसे यहां पे क्या लिखा है, लेस इज मोर. और एग्जांपल्स इसके देखते हैं. सो पैराडॉक्स सजेस्ट हैविंग लेस ऑफ समथिंग कैन एक्चुअली बी, जैसे एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, rather earn money by spending it. So this looks very contradictory, student, कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो पैसे earn कैसे कर रहे हो आप. So earn money by spending it is one of the examples of paradox. Next up we have oxymoron, which is again very much similar to paradox. पैराडॉक्स में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है. ऑक्सीमोरॉन में देयर आर टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग प्लेस्ड साइड बाय साइड. टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग्स प्लेस्ड साइड बाय साइड.
टू क्रिएट अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, वो डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। क्या डिफरेंट मीनिंग बनता है? देयर वॉज डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, इतना साइलेंस था दैट द पर्सन बिकेम डेफ। साइलेंस से डेफ, sounds contradictory. Words of opposite meanings juxtaposed together. Juxtapose. The word juxtapose means placing them side by side. So सिर्फ deafening silence नहीं, इसके कुछ और भी examples हैं जो मैं चाहता हूं आपको पता हो। वो examples हैं, if I say something is an open secret, pretty bad, pretty ugly, बहुत सारे examples होते हैं, these are just a few students. Confirmed rumor. Instagram and social media these days is filled with unpopular celebrities. There are unpopular celebrity students. So these are some of the words. Words opposite meaning ke hai, but they are placed side by side. Open secret. If something is a secret, how can it be open? Example of oxymoron. Pretty bad. Example of oxymoron. Confirmed rumor. Unpopular celebrity. So these are some of the examples, students, for oxymoron. So हमने irony पढ़ा, हमने paradox पढ़ा, oxymoron पढ़ा. Next is antithesis. Very much similar to what paradox is, but antithesis में एक चीज खास होती है कि number of words on both side of the sentence are same. ये number of words same होते हैं, यही इसको differentiate करता है, and that is how यही एक वो peculiar चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, whether when you wish to decide कि क्या ये पैराडॉक्स है या ये एंटीथेसिस है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना होता है। फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू ऑपोजिट आइडिया प्लेस्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट, इट इज लाइक अ सीसॉ, ऐसा कुछ। ब्रदर इज टॉल, आई एम शॉर्ट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स लगभग सेम है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ। सो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। Man proposes, God disposes. Speech is silver, silence is golden. So here again, आप silence speech and keep in mind the number of words on either side. Number of words are generally same. अगर आप बोलते हो कोई वर्ड इधर ज्यादा इधर कम है, so that word could be a conjunction. कोई conjunction की वजह से आप बोल सकते हो. And when you choose conjunction, तो conjunction को आप किसी भी साइड नहीं रखोगे ना, because they are used to join sentences. So that is what antithesis is. Next up we have euphemism. Euphemism में कोई ऐसी चीज जो बोलने में शायद सामने वाले को बड़ी हार्श लग सकती है. So what we do in euphemism, we try to make it a little mild. Mild तरीके से express करते हैं. Euphemism is a mild, indirect way of saying something that might be considered harsh. So if someone has died, है ना, died नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे. Instead of saying someone has died, मैं वहां पर एक थोड़ा बेटर फ्रेज यूज कर रहा हूं. बेटर फ्रेज कि वो डायरेक्ट, ब्लंट, खराब ना लगे. So that phrase is someone getting passed away. So that is what euphemism is, students. And the last figure of speech that we are discussing today is understatement. जैसा हमने हाइपरबोल में पढ़ा था कि चीजों को एग्जैजरेट करके बोल रहा हूं, अंडरस्टेट में मैं अंडरस्टेट कर रहा हूं. किसी शहर में सुबह उठकर आप देख रहे हो कि देयर इज फ्लडिंग इन टाउन एंड यू आर सेइंग, यार मुझे लग रहा है थोड़ा पानी गिरा है. थोड़ा पानी? रियली? इफ देयर इज फ्लडिंग इन टाउन, इट मस्ट हैव रेन्ड अ लॉट, बट यू आर सेइंग थोड़ा सा पानी गिरा है. सो दैट इज अंडरस्टेटिंग. दैट इज व्हाट अंडरस्टेटिंग इज. Understating is a figure of speech in which a person expresses an idea and makes it seem less important or serious. कि माइल्ड तरीके से एक बात बता दी अपनी. सो इट इज जस्ट अ स्क्रैच. एक सीरियस इंजरी आप कह रहे हो, हाँ थोड़ा सा
थोड़ा सा लगा है. So that is what understatement is, student. And bacha party, that that brings us to the end of today's discussion. But सिर्फ डिस्कशन था. प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस कहां पर मिलेगी? Once the session is over, comments में आपको एक लिंक मिलेगा. Click on that link. 15-20 questions आपका वहां पे वेट कर रहे हैं. That is all for today's discussion. I'll see you guys now in the next week. Thank you so much. Bye bye.